नीचे नहीं आ रहा है। देखिए சுவாமிஜி வந்துருக்காங்க. அது வந்து அகில பாரதிய நம்ம தாய் பசுவை கோமாதாவை ராஷ்டிர மாதா ஆகிறதுக்காக ஒரு திட்டம் வர அக்டோபர் 11ஆம் தேதி ஆரம்பிச்சுட்டு இங்கே தமிழ்நாடுக்கு வராங்க. ஆனால் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நாளைக்கு 22 செப்டம்பருக்கு அயோத்தியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதில் வந்து 4 சங்கராச்சாரியரும் கூட இருந்துட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மெயினான இதில் வந்துட்டு இருக்க ஆச்சாரியர் ஸ்ரீ அவிமுக்தேஸ்வரானந்தஜி ஜோதிர்மட்டோட சங்கராச்சாரியர்கள். அவங்களோட கூட வந்து பூஜ்ய கோபால் மணிஜி கூட இருப்பாங்க. அவங்க கோபால் மணியில் வந்து ரொம்ப வருஷ காலமாகவே கோ திட்டத்துக்கு ஆந்தோலனம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த திட்டம் வந்து கோமாதாவை ராஷ்டிர மாதா ஆகிறதுக்காக, ஆனால் தாய் பசுவை நம்ம நாட்டோட தாய் மாதா ஆகிறதுக்காக இந்த திட்டம் நாட்டு முழுசாக 33 ஸ்டேட்லையும் எல்லா யூனியன் டெரிட்டரியும் சுவாமிஜி கிட்டத்தட்ட நடந்துட்டு பயணம் கொடுத்துட்டு போவார். இதுக்கு முடிவு வந்து டெல்லியில் நடத்திடுவார். இதுக்கு வந்து அங்கங்கே சென்னையில் வந்து 11 அக்டோபருக்கு வந்துட்டு ஒரு இடத்துல கோத்வஜை ஸ்தாபனம் பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்தாபனம் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து அவங்க பாண்டிச்சேரி கிளம்புவாங்க. சுவாமி அவிமுக்தேஸ்வரானந்தஜி இன்னைக்கு வந்து இங்க வந்துட்டு இருக்குது. சுவாமி अविमुक्तेश्वरानंदजीயோட स्वामीजी कोऑर्डिनेटर வந்து भारत यात्रा स्थापना करने गोभक्त विकास पंत जी एंड இங்க வந்து अखिलेश ब्रह्मचारी जी ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी जी अखिलेश जी ब्रह्मचारी जी இங்க வந்துட்டு இருக்காங்க. இது யாத்திரை ரொம்ப வருஷ காலமாக 1966 வந்து कृपा पात्र से और स्वामी जी नाम दिल्ली में गौ माता राष्ट्र माता ஆகிறதுக்காக போராட்டம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்பொழுது இது நடந்துட்டு இருக்குது. இந்த போராட்டம் நாட்டு முழுசாக நடந்துட்டு நம்ம நாட்டு தாயே பாரத நாட்டோட தாய் ஆகிறதுக்காக இந்த போராட்டம் நடத்திட்டு இருக்கோம். வணக்கம், நன்றி. अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गो परंपरा। जय गौ माता, जय राष्ट्र माता, वंदे गौ माता। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इस प्रेस क्लब में पधारे हुए आप सभी पत्रकार बंधुओं का ज्योतिर्मठ की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी गौ माता की और सनातन की संस्कृति के साथ जो नवता हो रही है उसको देखते हुए अभी शंकराचार्य भगवान और गौगंगा कृपाकांक्षी पूज्य गोपाल मणि जी महाराज संपूर्ण भारत में सनातन की मूल जिसे कहते हैं, जैसे कि हमारे वेदों ने कहा है गावो विश्वस्य मातरः पशवो न गावः। गाय पशु नहीं है, गाय विश्व की माता है। उसी को गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित कराने के लिए पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान संपूर्ण भारत की राजधानियों में, हर प्रदेश की राजधानी में एक गौध्वज की स्थापना करने आ रहे हैं, जिसमें पूज्य शंकराचार्य भगवान आपकी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 11 अक्टूबर को पधारेंगे और आगे की जो भी यात्रा की जानकारी है वे हमारे
यात्रा के सह संयोजक आदरणीय विकास पाटिल जी आपको देंगे। वणक्कम नमस्कारम। तमिलनाडु चेन्नई में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कारम करते हैं, स्वागत करते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी हैव अराइव्ड इन चेन्नई to taken the movement of Gomata to declare as Rashtramata, as mother of the nation. You all are aware that the freedom movement of the India, where Mangal Pandey is recognized as a revolutionary in 1857, he fought for the faith which he have on cow as mother. When he know the cartridge it has to be opened from mouth, is made from beef. He denied it and fully shot down the bullets in the chest of the British officers. This led to the first freedom movement of 1857, which is led due to the faith on the Gau Mata or cow. After which in 1966, धर्म सम्राट कल्पात्री जी महाराज, the renowned saint of Shankaracharya Parampara, has led a great revolution and great Andolan in the capital of India, Delhi, where thousands of Gaubhakt sadhus are brutally murdered, tortured, and after it, all the saints there present has the motivation to further all the Sanatanis to declare cow as Rashtramata, and the killing of the cow should be prohibited in the country. As we all know, one nation has one law, one constitution. Like same, we want one law for Gau Mata in throughout the nation. And for this purpose, we want cow to be declared as Rashtramata. For this movement, a Gau Dhwaj Sthapna Yatra is carried down across the nation, in which it will go throughout the country in the capitals, all the capitals of the state of our India country. So I urge to all the people that for this purpose, Jagat Guru Shankaracharya Jyotirmat Swami Abhimukteshwaranand Ji Maharaj, who are accompanying this Gauraksha movement and walk barefoot from Govardhan to Delhi also for this noble cause. As you all know, from Kerala, Adi Guru Shankaracharya moved throughout the country to unite the nation, to unite the Sanatan Dharma. Same as Adya Guru Shankaracharya, Jyotish Peethadishwar Abhimukteshwaran Ji Maharaj is moving around the countries to unite all the peoples, all the Sanatanis for the noble cause to declare cow as Rashtramata, mother of the nation, to stop the killing of cow, same what we get from the Shankaracharya Parampara. And you know the flag is hosting on the top of the Kedarnath temple. That temple, the flag which is hosted on the above the Kedarnath temple is named as Vrishabh Dhwaj. That flag is the flag of Bhagwan Shiv, Lord Shiv. Lord Shiva's flag have Nandi on it, and the flag which is hosted by Jagadguru Shankaracharya has written on it Gau Mata Rashtramata on that flag or that flag. That will be hosted in the Tamil Nadu state in Chennai on 11th of October when Shankaracharya will reach here, and a Gau Sabha is also organized there, where he will deliver the speech, and along with Shankaracharya, Pujya Gopal Mani Ji Maharaj is also there, who from many years, since 10 years, he is very with full capability and full by faith is running this movement throughout the nation. So on this auspicious day, I want to tell you all that this rally, this yatra will start from 22nd of September, means tomorrow, from Ayodhya, the land of Bhagwan Ram. The yatra will start from there and will go to Purva, to east of our country, and then it will round to
south of our country, and then it led to west of our country, and then after it will reach to the north of the country. On 26th, it will conduct on Delhi, where it will finalize the rally, and the Sankalp, the Go Mata, Rashtra Mata Sankalp will be taken together by thousands of lakhs of people in the capital of India, and this will the proper gratitude for our saints, for the Bhumi of Bhagwan Ram Krishna, for Bhumi of Bhagwan Murugan, Bhagwan Kartikeya, Bhagwan Shiv, Bhagwan Tirupati Balaji. As you all aware, Tirupati Balaji is also have a story linked to cow. The Murti which is in Tirupati Balaji is get out when the cow is got there and drop their milk on the land, and from that place Tirupati's Murti is found out, and that build the furthermore the temple of Lord Tirupati Balaji. So I urge all the peoples of Chennai in this regard to come forward on 11th of October and welcome Jagadguru Shankaracharya Maharaj, who is coming in your state, and join in the movement to declare cow as mother of the nation, to stop the killing of the cow and give the regard what we give a Sanatani to their mother, same as for the cow, and what we call it in Bharat ka Gau Mata, Rashtra Mata, Rashtra Mata, Bharat Mata, Gau Mata, Rashtra Mata, राष्ट्र माता, Bharat Mata. बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। यही सब आपसे कहना है, आप इसको स्थान दीजिए। प्लीज carry this news in your holy newspapers, your journals, your YouTube channels, in all. Please cooperate us. We want this movement to be further. It should be covered throughout the nation with your newspaper, and we regard you all. Thank you. Welcome. Vanakkam. Namaskar. Jai Ho Mata. Rashtra Mata. Thank you.